Hello dear student, welcome to my channel Infinity Pharma. So in this video lecture, we will discuss about the most important topic from the physical pharmaceutics second, that is the optical, kinetic and electrical properties of colloids. Optical, kinetic and electrical properties of colloids. So this question can be asked for 10 mark, and it is very important topic from the unit first. Okay, so let's discuss one by one the optical, kinetic and electrical properties of colloids. This is the fourth lecture from this unit. So in previous lecture, there is a classification of colloids, that is lyophilic, lyophobic and association of the colloids we had discussed. So first of all, go through this video. You can understand all the basic concepts in the classification. So in this today's lecture, first of all, start with the optical properties of the colloids. Okay, so this is the classification of the different properties, that is optical properties. First one, it is the optical properties of colloid. सेकंड वन इट इज द काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड एंड थर्ड वन जो चार्ट है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स. सो मेनली जब हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज इसमें हम स्टडी करेंगे अभी. टिंडाल इफेक्ट, इट इज द फर्स्ट वन, इट इज द टिंडाल इफेक्ट. सेकंड वन, इट इज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी. थर्ड वन, it is the electron microscopy, and fourth one, it is the turbidity. Okay, so these are the four properties we can discuss in the optical properties of the colloids. So second, जो kinetic properties जो है हमारी, उसमें first one है Brownian motion, second property है diffusion, third properties है sedimentation, fourth properties है viscosity, and fifth one है osmotic pressure. So these are the five properties we can discuss in this kinetic properties of the colloids. And last में जो electrical properties जो है हमारी, उसमें first one जो है electroosmosis है, second one it is the electrophoresis है, third one it is the electrical double layer है, fourth one it is the sedimentation potential, fifth one it is the streaming potential, and sixth one it is the Donon membrane effect. So these are the six प्रॉपर्टीज फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द colloids. सो इसमें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ऑल द प्रॉपर्टीज, लाइक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड थर्ड दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द चार्ट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इन सेमेस्टर एग्जाम, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द colloid, एक टू कॉम्बिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं फॉर 10 मार्क. Otherwise, explain kinetic and electrical properties of colloid for 10 mark. ऐसे टू प्रॉपर्टीज आपको कॉम्बिनेशन में एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं. सो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन ऑल दिस प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑप्टिकल. आपको जब पूछे जाएंगे ऑप्टिकल एंड काइनेटिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जाम में इसको जो स्टार्टिंग के पेज है इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लिख दीजिए. सेकंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज उसमें आप एक्सप्लेन कर लीजिए. Okay, first of all mention the properties and then explain one by one all the properties. In that way you can write the answers in the exams. Okay, so mainly जो electrical properties है, electrical properties of colloid, that is electroosmosis, electrophoresis. अब ये याद कैसे रखेंगे प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है, एंड सेकंड वन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड वन है इलेक्ट्रोफोरेसिस. एंड जो मिडल पार्ट है कौन सा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. मिडल कौन सा है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. एंड उसके बाद है सेडिमेंटेशन पोटेंशियल एंड स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, सेडिमेंटेशन एंड स्ट्रीमिंग पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है हमें मिडल में लिख देना है, और उसके ऊपर दो प्रॉपर्टीज है, उसके नीचे दो प्रॉपर्टीज है. उसके नीचे दो कौन सी है, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल एंड स्ट्रीमिंग पोटेंशियल. उसके ऊपर कौन सी दो है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो इन दैट वे you can remember these properties. and last में आपको remember करना है Donon membrane effect. so ये जो electrical properties है आपको याद हो जाएगी. in first optical properties, इसमें first जो है Tyndall effect. जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड हमने स्टडी किए थे, उसमें आपने Tyndall effect एंड Brownian motion आपको एक फेमिलियर प्रॉपर्टीज है. सो let's put up these two properties into optical and kinetic properties. First of all Tyndall effect, and in kinetic properties that is the Brownian motion. Okay, and in optical properties, optical means that is the microscope. Okay, so in that
ultra microscopic, electron microscopy is there, and turbidity. So in that way we will remember these optical properties of the colloids. And जो last है that is the kinetic properties of the colloids. Kinetic properties of the colloids, इसमें क्या आप याद रख सकते हैं? First of all याद रखिए that is the Brownian motion. First of all Brownian motion, then diffusion, sedimentation, viscosity and osmotic pressure. So these are the 5 properties in the kinetic, 6 properties in the electrical, and 4 properties in the optical. 4, 5 and 6. That is 4, 5 and 6. In that way increase one properties in kinetic and electrical properties of the colloids. Take a screenshot of this and remember all the properties of the colloids. Let's discuss one by one from optical properties of the colloids. So in the optical properties, first property is there, that is the Tyndall effect. First property, it is the Tyndall effect. So what is meant by Tyndall effect? In bracket हम इसे light scattering भी कह सकते हैं, light scattering. So it is the simple definition is there in which it is the scattering of light by the colloidal particles. Okay, scattering of light by the colloidal particles. Let's consider this is a beaker, in that colloidal solution is there. इसमें क्या लेंगे हम? colloidal solution. इसमें क्या होंगे? colloidal particles होंगे. जब हम light इस colloidal particles से pass करेंगे, when intense beam of light, this is the beam of light, pass through that of colloidal solution, pass through the colloidal solution. When consider in this figure, first of all one solution is there and second solution it is the colloidal solution. Okay, first जो है क्या है? true solution है, and second one it is the colloidal solution. Second one it is the colloidal solution. So true solution इसे हम homogeneous solution भी कह सकते हैं, homogeneous. Okay, and जो colloidal solution हमें मालूम है it is the hetero, because it is a heterogeneous system consist of disperse phase and dispersion medium. Okay, जब हम intense beam of light pass through that of true solution, it directly transmitted. Okay, इसमें आप जो scattering है नहीं ऑब्जर्व कर सकते. जो beam है वो directly transmit होगा from one part to another part. Okay, and this is observed on this black background. This is observed in black background is there. But when we pass the light through the colloidal solution, in this diagram we can see that when light pass through this colloidal solution, there are some colloidal particles are there and their size is large. Their size is large. Because of that they absorb the light and appear as a dark spot. They appear as a dark spot. Okay, they appear as a dark spot and it can be seen on this dark background. It can be seen on this dark background. So this is simply the Tyndall effect is there. Simply आपको इसमें क्या याद रखना है? When we pass the intense beam of light through the colloidal solution, it scatters the light. It is known as Tyndall effect. So इसे हम light scattering भी कह सकते हैं. That is the scattering of light by the particles in the colloid. Let's see the definition. The Tyndall effect is the scattering of light by the particles in a colloid. Okay, and the phenomenon is known as Tyndall effect. इसे हम क्या कहते हैं? That is the Tyndall effect. And the path is known as Tyndall cone. ये जो path form किया है by the colloidal particle, इसे हम क्या कह सकते हैं? Tyndall cone. इसे हम क्या कह सकते हैं? Tyndall cone. यही चीजें आपको इसमें याद रखनी है. First of all, scattering of light and Tyndall cone. What is Tyndall cone? It is the path which is formed by these colloidal particles when we pass the light through that colloidal solution. Okay, but when we pass the light through the normal solution, that is true solution, there is no scattering of light is observed. So जो scattering of light हमें observe only in heterogeneous solution में आपको observe करने के लिए मिल सकता है. So it is known as Tyndall effect. So read all the points. First of all, definition is there. What is Tyndall effect? What is Tyndall cone? Then blue light. Focus on this point, that is blue light scatters more than red light. Why? Blue light scatters more than red light because blue light has the shorter wavelength. Blue light has the shorter wavelength and red light having the maximum wavelength is there. Vibjor. आपको मालूम होगा Vibjor.
इसमें इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, वेवलेंथ जो है क्या हो इंक्रीज होती है। इसमें आप ब्लू लाइट दे सकते हैं, इधर है थर्ड ऑप्शन, एंड जो रेड है वो लास्ट में है। ओके, so blue light has the shorter wavelength and red light has the maximum wavelength is there. Also the intensity of light scattered, it depends upon the size of the particles and the frequency of light we pass. Simple है, जब ये जो scattering of light है depends on two things, that is the first one, it is the particle size. First one, it is the particle size. ये जो particle size है it can affect the color of the dispersion or a scattering of light. Also it depends upon the light, it depends upon the frequency of light, how much frequency we can pass through that colloidal solution, so it matters. When high intensity beam is there, that is high scattering is there. Okay, high intensity beam is there, high scattering it can be observed in that colloidal solution. Low intensity beam is there, so there is a low scattering of light is there. Okay, based upon the frequency of that light, there is a scattering depends upon that point also. So mainly on the 2 points, that is particle size and the frequency of light, it can affect. So इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, सेकंड आपको डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट, दैट इज लाइट स्कैटरिंग, एंड व्हाट इज टिंडाल कोन, द पाथ व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड देन आपको और पॉइंट इसमें ऐड करने कौन सा, ब्लू लाइट scatters more than red light because there is a difference in their wavelengths. Okay, and also this scattering intensity, it depends upon the particle size. First of all, it depends upon the particle size, and also it depends upon the frequency of that light we can pass through that colloidal solution is there. Okay, simple property is there, that is the Tyndall effect. Okay, so take a screenshot of this. So this data can be helpful to write the answers in the exams. Okay, then ट्रू सोल्यूशन और होमोजेनियस सोल्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. जो ट्रू सॉल्यूशंस जो रहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, लेट्स कंसीडर टू एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्या है ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होंगे. ये जो ट्रू सॉल्यूशन मतलब इसमें जो हमने कोलाइडल पार्टिकल्स अभी ड्रॉ किए, अभी ये दिख नहीं सकते इसमें से. ओके, ये प्रॉपरली डिसॉल्वेबल होते हैं इन दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सो इट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन. It is homogeneous solution. And but when we talk about the heterogeneous solution, में जो कोलाइडल पार्टिकल की साइज जो होती है वो लार्ज होती है. ओके, एंड व्हेन वी पास द लाइट, हाई इंटेंसिटी बीम इज देयर, we pass the light, there is no scattering of light observed in the homogeneous solution, but when we pass the light, there is a scattering of light observed in the colloidal solution. This is the colloidal solution. Okay, and this can be observed in the dark background. Consider this is the dark background is there, so this is the path, and the path also known as Tyndall cone. Path, it is known as Tyndall cone, and the effect is known as Tyndall effect. Okay, this is the simple properties there. So mainly consider these things. So जो true solution or a homogeneous solution do not show the Tyndall effect, and they have the small particle size, and heterogeneous solution or a colloidal solution shows the Tyndall effect. shows the Tyndall effect. और next 2 point है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स. इन केस लायोफिलिक, अभी इसमें एक याद रखिए, जो लायोफिलिक सॉल्यूशन जो होते हैं, लायोफिलिक, फिलिक means all of you know that philic means good interaction is there, good interaction or a loving nature is there. So once good interaction is there, their particle size can be small, and they forms the true solution, so the Tyndall effect cannot be observed in these lyophilic colloids. Similarly, in reverse case is there, that is lyophobic. Lyophobic means heating nature is there, heating. So there is no good interaction between the solute plus solvent, that is disperse phase and dispersion medium. So there is a heterogeneous solution, it is formed, heterogeneous solution. So it forms the heterogeneous solution, and there is a more Tyndall effect can be observed in these lyophobic colloids, more Tyndall effect observed in the lyophobic colloids. So these are the points in the
Tyndall effect. Simple concept is there, that is Tyndall effect. So let's move forward to the ultra microscopy, that is second properties in the optical properties of the colloid. सेम कंसेप्ट है, हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, फोकस ऑन द डायग्राम, ये जो सॉल्यूशन है दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, उसमें हम क्या करेंगे, लाइट पास करेंगे. दिस इज द लाइट सोर्स एंड पास द इंटेंस बीम. इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटेंस बीम ऑफ लाइट, इंटेंस बीम ऑफ लाइट दैट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन. इसमें सिंपली हम लाइट पास करेंगे एंड ये जो लाइट पास हो रही है इस सॉल्यूशन से, इसमें हमें कोरल पार्टिकल्स ये जो है वो क्या करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे. ये क्या है, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे एंड वंस दे एब्जॉर्ब द लाइट एंड दे अपीयर एज अ डार्क स्पॉट, दे अपीयर एज अ डार्क स्पॉट, बिकॉज जब कोई पार्टिकल लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है वो अपीयर एज अ डार्क स्पॉट. ओके, एंड सिंपली दिस डार्क स्पॉट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप, दैट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व थ्रू द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स. ओके, हमें ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हमें मालूम है. फर्स्ट जो रहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कौन से माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स. ओके, सेकंड जो रहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा, एंड थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो कंपाउंड और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप हम डे टू डे प्रैक्टिकल में यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. एंड जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अभी हम ये जो लाइट स्कैटरिंग ऑब्जर्व करने के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. सो ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू द दिस ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. एंड सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इनकी रिजॉल्विंग पावर इन दोनों से ज्यादा होती है. रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज हाई देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी एंड that of ultra microscope. Okay, and these ultra microscope placed right to the that colloidal solution. There is a right angle between the this colloidal solution, right angle between the this colloidal solution and the microscope. Already it forms the right angle to that of colloidal dispersion. जब हम कोई स्लाइड्स ऑब्जर्व करते हैं इन द माइक्रोस्कोप, ऑटोमेटिकली इट फॉर्म्स द राइट एंगल और 90 डिग्री एंगल टू दैट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, यही कंसेप्ट है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी. सिंपली अब इसमें हम पॉइंट्स देखेंगे कौन कौन से हम इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज किया और जिग्मोंडी, इट इज साइंटिस्ट नेम, इट इज यूज द टिंडाल फेनोमेनॉन टू सेट अप द apparatus नेम्ड एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने पहले एक कंसेप्ट यूज किया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज. ये जो हम सभी प्रॉपर्टी स्टडी क्यों कर रहे हैं, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, देयर शेप, देयर स्ट्रक्चर. ओके, ये सभी इसकी चीजें जानने के लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टीज, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टिंडाल इफेक्ट. ओके, सो इसमें व्हेन इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन against the dark background. Okay, the focus of light is then observed with the microscope at right angle. Okay, at right angle to the beam. ये जो फोकस हमने जो लाइट सोर्स हम यहाँ पर रखेंगे, ये क्या करेंगे, पास करेंगे थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड टू द कोलाइडल सॉल्यूशन. ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में एक राइट एंगल फॉर्म होना चाहिए, दैट इज द 90 डिग्री एंगल इट इज देयर, एंड ऑब्जर्व द कोलाइडल सॉल्यूशन. सिंपल है, light source pass through the colloidal solution, and when you observe the colloidal solution, there it is a formation of the right angle to that of colloidal solution is there. Then individual solar particles appear as a dark spot or a bright spot. Already हमने डिस्कस किया है, it forms the bright spot or a dark spot. Okay, simple concept. when कोई लाइट पार्टिकल से पास होगी तो it automatically affect as a bright. Then an ultra microscope does not give information regarding the shape and size of the soil particles. Only we can see the particles, but it does not give the any information regarding their size and their shape. So we can use the electron microscope for that. Okay, we can use the electron microscope for that
its actual size and shape determination. जब कोई एक्चुअल साइज हमें इसमें चाहिए फॉर द कोलाइडल पार्टिकल्स, हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो इट इज रिगार्डिंग द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी. सिंपल आप इसमें क्या करिए, सिर्फ डायग्राम इसमें ड्रॉ करिए और ये जो पॉइंट्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं ऐड कीजिए. सो दिस इज टोटल ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी. सो देन next move forward to the electron microscopy. Electron microscopy, same concept is there, only at the place of ultra microscope we use electron microscope. We use electron microscope, and only difference is there, that is the high resolution power. High resolution power is there of electron microscope. So because of their high resolution, so we can find the particle size and shape. We can find the particle size and shape. But in case of ultra microscopy, we cannot actually determine the particle size and shape. We can only see the particles that appear as bright spot. Okay. So this is the view under the microscope. This is the soul, that is colloidal solution. This is light source. So we can pass this light to the solution and observe at a right angle to that of electron microscope. Okay, electron microscope. So it gives the actual picture of the colloidal particles. It gives the actual picture of the colloidal particles. High energy electron beam is passed through the colloidal solution and it appears as a bright spot, and it gives the actual information regarding their size, their shape, and the structure of colloidal particles. Structure of colloidal particles. So this is about the electron microscopy. Then next move forward to the turbidity of the colloidal solutions. So all of you observe this turbidity in day to day life. Okay, turbidity of the colloidal solution. ये क्या है? जब हम ये जो पार्टिकल साइज इसमें स्टडी करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन स्टडी करेंगे एंड लाइट स्कैटरिंग. ये जो turbidity है, it depends totally upon the light scattering also the particle size and also the concentration. The primary mechanism of turbidity is the scattering of light, and it interacts with the dispersed particle in the colloidal solution. Turbidity also depends upon the light scattering. Okay, also it depends upon the particle size. As the smaller the particle size, tend to scatter light more effectively. Okay, जब हम कोई solution इसमें लेते हैं और let's consider two example. Okay, ये जो है particle size small है, particle size इसमें क्या है small, and जो second है इसमें क्या है large. So in comparison of to these, there is a good scattering of light in the first case because of their small particle size, because light scatter more effectively. So this is the effect of particle size in the turbidity of the colloidal solution. Next part इसमें है concentration of the that colloidal solution. So what is the effect of concentration? Higher the concentration of the colloidal particles, the greater the turbidity. Simple बात है, जब concentration इसमें ज़्यादा होगा, there is a higher turbidity we can observe in that colloidal solution. So this is about the optical properties of colloid. First one हमने कौन सा डिस्कस किया, that is the Tyndall effect. इसमें हमने explain कर लिया. Then ultra microscope is there, then electron microscopy and turbidity. So in next lecture we will discuss the kinetic properties of the colloid. Okay, thank you all of you. Please like, share and subscribe my channel for more upcoming videos. Please take a screenshot of these optical, kinetic and electrical properties. Thank you.